रेडियस। आज हमारा टॉपिक बेसिकली भी वन बाय वन वी विल स्टार्ट। वी विल गो लिटिल रिकैप, एक दो पॉइंट पे खाली रिकैप कर लेते हैं सो दैट वी विल नो दैट कि हमने क्या पढ़ा था। तो रिकैप इज व्हाट द बेसिक ट्रेंड हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा था, दैट वाज द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई। एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर दैट एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। गॉट इट? एंड इफ यू बी talk from top to bottom, it is always in increasing order. It is always in increasing order. This order is very very important because other factor are dependent upon this, size strength. I don't fight for myself. Now we are going to discuss about the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. द टर्म आयोनाइजेशन की बात अगर हम करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है? व्हाट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हियर there is a two term, one is known as ionization and that is known as enthalpy, and sometime it is also known as ionization potential. Ionization potential. Ionization potential, both are same thing, but there is only difference of units. यूनिट की बात अगर करें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो मेजरमेंट होता है दैट इज डन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें दैट इज टर्म इन टर्म ऑफ आइदर किलोजूल पर मोल. यूनिट इज डिफरेंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. आयोनाइजेशन का क्या मतलब है इसको हम थोड़ा समझेंगे. लेट बी हैव सोडियम एटम and its electronic configuration is going to be 2,8,1. Got it? 2,8,1. तो अगर हम इसको हीट करेंगे, इन अर्लियर थी सॉलिड स्टेट में, तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू हीट इट. जब इसको हम हीट करेंगे इट इज गोइंग टू बी मेल्ट. दिस इज नोन एज फ्यूजन, मेल्टिंग बोलेंगे. and your sodium is going from solid state to liquid state. Still configuration remains same. अभी यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ. अगर हम इसको और हीट करेंगे and we are going to give it heat of vaporization. Heat of vaporization. Now I will get sodium in gaseous state. But still configuration is going to be remain same 2,8,1. अभी भी सोडियम एटम हमारा आयोनाइज नहीं है. गॉट इट? अब अगर अब इसके बाद आफ्टर दिस जैसे ही सोडियम का ये जो पर्टिकुलर एटम है, दिस इज इंडिविजुअल एटम होगा, आइसोलेटेड हो गया, एंड दिस इज गैसियस आल्सो. आइसोलेटेड एंड गैसियस. आइसोलेटेड का मतलब ये पहले तो ग्रुप में था, वन इट वाज अ सॉलिड ब्लॉक. यहाँ पे जो इसका ब्लॉक था दैट वाज अ सॉलिड. इट वाज बिग पीस कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ मेटालिक बॉन्ड. लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो दे स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर, दे आर इन द लिक्विड स्टेट. सोडियम यहाँ पे आपके लिक्विड स्टेट में आ चुकी थी. व्हाट इट? लेकिन जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे इट इज गोइंग इन द गैसेस स्टेट, तो ये स्टेप कहीं ना कहीं हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के साथ आ गई, मतलब एटम के फॉर्म में आ गया. दिस इज इंडिविजुअल एटम. इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में आ सकता है. डायरेक्टली भी हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं. अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो वी हैव टू प्रोवाइड हियर हीट ऑफ सब्लिमेशन. हीट ऑफ सब्लिमेशन को हम यहाँ पे इनडायरेक्टली एटमाइजेशन के नाम से भी बोल सकते हैं. प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे. बट अगर फर्दर इसकी हीटिंग यहाँ पे करेंगे तो नाउ heat is not going to use
फॉर द फेज ट्रांजिशन ऑलरेडी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की पोजीशन आ चुकी है, अब इसमें इसका स्टेट नहीं चेंज होगा। तो एनर्जी इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ फर्दर हीट करेंगे तो देर इज अ रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन and we will get sodium positive ion with the electronic configuration 2,8. This is the first ionization. आइए, this is the ion. आयन हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ जो हीट की रिक्वायरमेंट है, दिस स्टेप की जो हीट है, दिस हीट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, वी आर गोइंग टू मेक ए केटायन। हमने यहाँ पे जो आयन बनाया दैट इज नोन एज पॉजिटिव आयन। नॉट ओनली दैट, वन बी रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे जो यहाँ पे एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंड आफ्टर दैट फर्दर अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो दैट विल बी नोन एज we can make Na+2 by the removal of one more electron. Generally it is not found, but science में हम मान सकते हैं कि everything is possible. Got it? So in this case we have to provide second ionization enthalpy. We have to provide here second ionization enthalpy. This is going to be high because earlier that was the atom, that was neutral. तो यहाँ से हमें definition मिलेगी, and this is going to be configuration 2,7. What is the definition of ionization enthalpy? How to define definition of ionization enthalpy? That this is defined as, amount of energy required, amount of energy required to remove loosely held electron, amount of energy required to remove loosely held electron. कहां से आपने निकाला? फ्रॉम isolated gaseous atom, isolated gaseous atom. Amount of energy required, ये जो required energy है, energy required to remove outermost cell electron or loosely held electron from where? Isolated gaseous atom is known as dash dash ionization energy. Ionization enthalpy. And we can see that this is the endothermic process because if you see carefully that के earlier क्या था, ये हमारे पास जो एटम है, एटम का सेंटर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज. The center is positively charged. Got it? So this is considered as Q positive. An electron is present here, that is taken as Q negative. So there is a electrostatic force of attraction between the electron and nucleus. अगर हम इस फोर्स को ब्रेक करना है तो there is a electrostatic force between nucleus and electron. Now we have to break it. If we want to make it cation, we have to break this force. इस फोर्स को हमें ब्रेक करना है.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हीट इट, हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। टेक एनी यानी किसी भी यूटेंसिल में या क्रूसिबल में लेकर के इसको गर्म कर दो। एज सुन एज जब पहले हीट करोगे तो सोडियम इज गोइंग फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड, लिक्विड टू द गैस। Later on, removal of electron takes place. But which electron will go first? So there is a preference 2, 8, 1. Last electron will go first. So that is known as the amount of energy required for removal of loosely held electron or outermost shell electron from an isolated gaseous atom. From an isolated gaseous atom. Got it? Now, what are the factors? Now, if we talk, what are the factors? Factors affecting ionization enthalpy. What are the factors that going to affect ionization enthalpy? What are the factors that affect ionization energy? The first and foremost, you can see that size, atomic size. Ionization energy is inversely proportional to size of atom or atomic size. Second, directly proportional to Z effective or effective nuclear charge, and also directly proportional to stability of electronic configuration. Stability of electronic configuration. You can say symmetry or stability, both the things are same. If there is symmetrical electronic configuration, half filled or fully filled, then it is going to be more stable configuration and ionization enthalpy will be more. The stability means half filled and fully filled. If configuration is going to be fully filled, then also ionization enthalpy is high, and if it is going to be half filled, then also ionization enthalpy is going to be high. Poor screening. पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने से न्यूक्लियर चार्ज हमेशा डोमिनेंट हो जाएगा। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गोइंग टू बी अप एंड अप, little more, and removal of electron will be very difficult. What it
Now this is the poor screening effect. Now this is the poor screening effect. Got it? And later on, how the trend is going to be, in periodic table. Now we will talk about, the trend. Periodic table. Now we will talk about the trend. Now, common trend will be according to the size. Got it? As you can see that size का जो common trend होगा, that is going to, as you can see that size का जो common trend होगा, size left to right size हमेशा क्या होगा? साइज की बात हमने बात कर ली कि atomic size is going to be in decreasing order. Atomic size is going to be in decreasing order. Got it? And at the same moment, top to bottom, atomic size top to bottom increases. So here we can see the ionization enthalpy is going to just, vice versa. Atomic size decreases, it means ionization energy is going to be in increasing order from left to right. Ionization energy from left to right. Ionization energy commonly increases. This is the general trend. And in top to bottom, we'll be talking in top to bottom, means in a group. Top to bottom, we'll be talking top to bottom in a group. Ionization potential, or you can say ionization energy. Ionization potential decreases, or you can say ionization energy decreases. This trend we have to remember to solve the problems. For example, if we have, let me solve a question, based upon this. We have lithium, we have, sodium, we have potassium, we have, rubidium, or maybe cesium. What will be the correct order of ionization energy? Correct order of their ionization potential. Now you can reply, so this is the, easy to understand how to reply it. See the size. Size of lithium is very small, You should remember the poem Helena करे रब से फरियाद. So as you move from hydrogen to lithium, lithium is bigger, sodium is more bigger. What it? This is the trend of size. Then the potassium, then there will be rubidium, then after that will be cesium. This is the size. This is the trend of size. Size increases from hydrogen to cesium. And the electronic configuration is very common for each and everyone. All the elements are having, configuration NS1 only. All the elements are having, configuration. Now, since configuration is same, so that we can see only the, size trend of size. As size increases, ionization enthalpy decreases. As size increases, ionization enthalpy decreases from lithium to cesium. Lithium has highest, then sodium, then potassium, then rubidium, then after cesium. One more things we have to remember that successive ionization enthalpy is always going to be higher, हमारे पास अगर कोई एलिमेंट X है
And if we are going to remove, one electron, this size is like this, this size is slightly bigger. And after the removal of one electron, there is a formation of positive ion. The size is going to be small. Remove one more electron. Size is going to be more smaller, If we remove one more electron, size is going to be more tiny. As you are going from left to right, from this side, neutral atom to positively charged ion, effective nuclear charge always increases. So ionization enthalpy is always going to be increasing, or there is no exception. And size is also going to be in decreasing order. Size decreases. So there's no exception. Whenever the atom is same, and you are going to remove the electron, one electron, second electron, and third electron. So this is known as first ionization energy, and this step is known as second ionization enthalpy. This is the third. So once you see the order in between them, so this is always in increasing order. There is no exception for any element. Third ionization enthalpy will be more than second. And second ionization enthalpy will be more than first. First ionization energy. This is constant for all the atom. Now, once we talk, you will get some exceptions like, we have rhodium versus magnesium. So once you compare in the first ionization enthalpy, तो आपको क्या मिलेगा? It's not exception. This is the common trend also, because the configuration is here 3s1, and here we are having 3s2. The ionization enthalpy of first ionization enthalpy of magnesium will be high. फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम की फर्स्ट ionization enthalpy ज्यादा है, because here the electrons are paired. If the electron is paired, it is going to be more stable. And here the electron is not paired. So from this we can say that first ionization enthalpy of magnesium will be more than sodium. And this we have to explain on the basis of their electronic configuration as well as size also. Size of the sodium is slightly bigger, size of magnesium is slightly smaller, because we are moving in period. Now, later on, if we talk, second ionization enthalpy, then what will happen? Compare the second ionization enthalpy of both the atom Na to Na plus. Then after remove one more electron from Na, you will get Na plus 2. Now, this is the first ionization enthalpy. And this will be the second ionization enthalpy. And if you see that, the configuration is going to be 2, 8 and 1. Here you will get 2 and 8 only. And after the removal of first electron, Na plus is going to be like, noble gas. It is having a noble gas electronic configuration.
So this value is going to be very, very high. So this value is going to be very, very high. And later on, this is the Na plus 2. Configuration is again going to 2 comma 7. Take another example of, or suppose you take the example of say magnesium, then what will happen? Its initial configuration is 2 comma 8 comma 2. Remove one electron from here. This will be the first ionization enthalpy of magnesium. This is going to be a little higher because the configuration is going to be 3s2. And when there is a formation of Mg plus 1, its configuration is going to be 3s1, 2 comma 8 comma 1. It is less stable. And once you remove again one more electron, that is known as second ionization energy, you will get Mg plus 2. So the configuration is going to 2 comma 8. Now compare this two data. Compare this data, second ionization enthalpy of sodium versus second ionization enthalpy of this. Which one is bigger? You can see here removal of second electron from Na plus is very, very difficult because it is noble gas. Here we can write that, second ionization energy of Na is very, very high. Because Na plus has noble gas electronic configuration. Noble gas electronic configuration. So removal of electron from the Na plus is very, very difficult.
एडिशन एंथैल्पी से आप कनेक्ट कर सकते हो क्या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, गॉट इट? एडिशन एंथैल्पी से आप कनेक्ट कर सकते हो क्या रिएक्टिविटी? क्या कनेक्ट करोगे? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या कनेक्ट करोगे? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। Which metal is considered to be more reactive? जहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल सबसे इजी हो। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की अगर हम बात करते हैं, देन वी कैन सिंपली कनेक्ट दैट मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गॉट इट? तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर द रिएक्टिविटी, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर द रिएक्टिविटी, मोर द रिएक्टिविटी। लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर द रिएक्टिविटी। तो नाउ पीरियोडिक टेबल में अगर हम इसकी बात करें, हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स वेरी, इफ यू गो वी नो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, देन आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड याद हो या तो तुम्हें साइज का ट्रेंड याद हो। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं रिएक्टिविटी, यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल increases as ionization enthalpy decreases. Reactivity also increases as size increases, size of metal, जनरल ट्रेंड जो हमें मिलेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर का लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू मेटलॉइड्स, फाइनली वी आर हैविंग नॉन मेटल। बट टॉप टू बॉटम चलोगे तो ऑल आर मेटल्स, मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है। Always increases. हमारे पास अगर लिथियम मेटल है लाइक सोडियम, देन आफ्टर पोटेशियम, देन रुबिडियम, ट्रिटियम, तो रिएक्टिविटी विल गो लाइक दिस, यू नो, साइज ऑफ मेटल जैसे जैसे बढ़ रहा है, इट इज इजी टू यू नो रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और इजी हो जाएगा, और रिएक्टिविटी भी हमारी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। Reactivity of metal increased. Reactivity of metal increased. इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अंदर ट्रेंड इज दैट इज यू नो नोन एज, इलेक्ट्रॉन गेन, गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी,
What is the enthalpy? Enthalpy is simply heat. What is the enthalpy? Enthalpy is simply heat. So if you see the definition, electron is going to gain and heat is going to be released. तो एग्जाम्पल इसका हमें हमें जिसकी डेफिनेशन बनानी रहती है, हमारे पास अगर मान लो कोई गैसियस एटम है, फ्लोरीन, दिस इज द गैसियस एटम दैट शुड बी आइसोलेटेड. डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट होगी आइसोलेटेड, देन गैसियस एटम, and we are going to give one electron to that particular atom. क्लोरीन के पास ऑलरेडी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देखते हैं आउटर मोस्ट में 2 + 2 4, then 2 6 1 7, and to complete the octet इसको एक इलेक्ट्रॉन की अर्जेंट नीड है. अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गिफ्ट हम पर दे दें तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गिफ्ट हम पर दे दें, इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हीट हमेशा इवॉल्व होती है, क्योंकि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन है. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होगा और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाली है, दैट हीट इज गोइंग टू इवॉल्व. इलेक्ट्रॉन गेन एंड हीट इवॉल्व, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इसकी डेफिनेशन होगी चेंज इन एंथैल्पी. एंथैल्पी में डाउट है तो आप हिट लिख सकते हो. when an electron is gained by isolated gaseous atom, change in enthalpy when an electron is gained by isolated gaseous atom, basically non-metals, because non-metal ही काम करेगा. This is the basically non-metal, because non-metal have a tendency to gain of electron and metal have a tendency to loss of electron. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमेशा हीट इवॉल्व होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो इट्स लाइक गेस्ट. हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमेशा कुछ पैसे लेके आते हैं. मान लो इसके पास 500 रुपीज है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है और जिस ऑर्बिट में जा रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी सपोर्ट करो कितनी है, 50 जूल. बट ये इलेक्ट्रॉन इजिली एंट्री नहीं करेगा, बिकॉज एज सुन एज इलेक्ट्रॉन यहाँ अप्रोच करेगा तो घर में गेस्ट वाले आने वाले होते हैं, घर के बच्चे चाहते हैं घर में गेस्ट ना आए. वाई यू आर कमिंग, गेस्ट आने से क्या होता है, दे आर गोइंग टू वो कमरे को ऑक्यूपाई कर लेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, दे विल टच ऑल द थिंग्स. तो ये हमेशा इसको अपोजिशन करता है, क्योंकि यहाँ ऑर्बिट में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द बैलेंस शेल ऑफ एटम. तो किसी भी एटम का जो कोर है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज. और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा. दिस रिपल्सन इज नोन एज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मतलब ऐसे इजी नहीं है कि कैसे घर में गेस्ट आ जाए. घर के पेरेंट्स चाहते घर में गेस्ट आए, लेकिन घर के बच्चे चाहते घर में गेस्ट ना आए. तो ऐसे में गेस्ट क्या करता है, पैसे लेके आता है, गिफ्ट्स लेके आता है. तो इलेक्ट्रॉन जब कहीं से आएगा तो उसके पास एनर्जी हम मान लेते हैं पहले से ज्यादा है. तो जब यहाँ एंट्री करने आएगा तो इसको यहाँ पे लॉस करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी. मान लो इस रिपल्सन में इसने -100 जूल लॉस कर दिया. मान लो इस रिपल्सन में इसने, जैसे घर में गेस्ट आते हैं तो मान लो उसने 200 रुपए की 100 रुपए की मिठाइयाँ ले ली. अब उसकी पॉकेट मनी 500 रुपए थी, उसने मिठाइयाँ खरीद ली 100 रुपए की. अब उसके बाद नेट मनी होगी 400 रुपीज. लेकिन
ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ फिक्स्ड है, ये जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 50 जूल है, लेकिन ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनर्जी मोर देन दैट। यहाँ ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एंट्री करेगा उसके पास मैक्सिमम 50 जूल ही यहाँ रखना है, अलाउ है, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू लॉस। तो 400 में से 50 वहां रख लेगा, 350 जूल एनर्जी इज गोइंग टू लॉस। इसलिए जनरली हीट यहाँ रिलीज होती है, और ये जनरली एक्सोथर्मिक है, एक्सेप्ट द नोबल गैसेस एंड मेटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहती, और मैनुअली हम उनको इलेक्ट्रॉन दे तो उसके केस में ये इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के जाए इंडोथर्मिक हो सकता है। डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन हीट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। नाउ अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, और एच का मतलब होता है हीट, या आयनाइजेशन, तो इसको आयनाइजेशन, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मेजरमेंट होता है दैट इज ऑलवेज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिस इज गोइंग टू टर्म इन टर्म ऑफ किलोजूल पर मोल। द फर्स्ट फैक्टर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी एंट्री करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा, स्टेबिलिटी ऑफ, right again, stability of electronic configuration, stability of electronic configuration, but directly proportional to that effective, effective nuclear charge ज्यादा है तो it's easy to take electron, you know. Now इसका हम final 10 देख लेते हैं, we have lithium, we have beryllium, we have boron, we have carbon, we have nitrogen, we have oxygen, we have fluorine, and finally we have neon. But the actual train जो जाएगा that is going to be, सबसे पुअर होता है नियान का 0 होगा, नियान आफ्टर द बेरिलियम, नाइट्रोजन, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम 0 मानते हैं, 0, इससे ज्यादा होगी किसकी, फ्लोरीन की, 1 by 1 इधर से चलते, लिथियम, लिथियम से ज्यादा होगी बोरान की, बोरान से ज्यादा होगी कार्बन की, कार्बन से ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी फ्लोरीन की। ना डाउट आता है कि इन तीनों की सबसे कम क्यों है, तो नाइट्रोजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p3,
एंड पी सबसेल में अगर वहां पे ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच है तो हम इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। वो हाफ फिल्ड है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली बेरिलियम के केस में भी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 देन 2s2। इट्स फुल्ली फिल्ड, पेयर्ड। पेयर्ड में शादीशुदा पहले से है तो शादी क्यों करेगा, मोह माया से दूर है। नियान का केस देख लो, नियान का एटॉमिक नंबर 10, 2,8। बोला आई एम वेरी स्टेबल, 1s2 2s2 2p6। इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। अब ये इसके पास कोई आया कि विल यू मैरी विद मी, बोले नो आई एम नॉट सिंगल, आई एम मैरिड, आई एम नॉट बैचलर। ये पूरी तरीके से पेयर्ड है। तो इसका इलेक्ट्रॉन की तरफ कोई मोह माया नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच करेगा बोले नो नो आई डोंट हैव एनी एफिनिटी टू यू। इसकी भी एफिनिटी पुअर है, इसकी भी एफिनिटी पुअर है, रेस्ट में कॉमन ट्रेंड चलेगा यहाँ से अंदर।